say HTTP request and server receives HTTP response. Sorry, server just creates a HTTP response for that and then return that response. How the client and server uses a TCP connection. Okay, that means they uses TCP protocol as a transport protocol for transmitting data from client to server. Okay, so how TCP is used here? First, client initiates the TCP connection, and the port number is used by TCP is port number 80. So that means actually TCP, uh, uh, the client initiates a TCP connection, and at what port number that connection need to be attached? That means port side, sorry, server side. So it is port number 80 because server listens on port number 80. Any web server that is configured, it usually listens on port number 80. That is the well-known port for a web server. Okay, so when client sends a request, server, if it is ready to receive the request, it will receive the request, and then once the connection is accepted by the server, so connection acceptance means client's request has been received or accepted by the server. Okay, once connection is established between client and server, then client and server can exchange request message and response message, okay, with each other. We will talk about the format of these messages, but all HTTP supports only two kind of messages. Client can send HTTP request and server sends HTTP response message. Okay, once this response and request message are exchange of this messages is done, complete ho jayega task, then the TCP connection will be closed. Okay, now here one thing you need to important thing you need to understand or remember is that HTTP is a stateless protocol. So let me explain you what is the meaning of stateless protocol. So stateless protocol means whenever suppose let's say there is a client and there is a server. Okay, so let's say client request after initiating a TCP connection, obviously client requests some, so let's say some data or some image, let's say image1.jpg, and in that request server just responds with image. Okay, this is the request and it just deliver that image1.jpg in the response packet. Actually I am just writing the name, but all these things will be incorporated into this image, will be incorporated into the response message that is server is generating. Okay, so now this image has been delivered to client. Now again suppose that after some sort of some small amount of time, again client may request this image one. Suppose that it has requested, then server actually will not remember this communication. Okay, I have just recently delivered, server will not tell the client that I have just delivered you the image one, so it is not required to deliver this image. Server doesn't remember this. Okay, it so that means whatever server receives a request, it just generates a response and forget about it, but it will not remember that immediately or sometime before I have sent you this image, so it is not required. You may have image with you, so it is not necessary to send me that image again. Okay, so that means server is not remembering what in the past it has sent and communicated to the client. Okay, so that means again after a small amount of time, it sends, client sends suppose a request for image one. If image is available, server will again respond with image one. Okay, that means server doesn't remember the previous communication with the client. Okay, so this is called stateless behavior. Any server, if it doing this kind of behavior, then it is called stateless behavior. Or any protocol, if it is doing that this kind of behavior, it is called stateless behavior. Now there is another, so obviously there is another kind of behavior that is called stateful. So stateful behavior means server will remember your recent communication. That means it will remember
will maintain the communication history with the client. कि अभी हमने recent past में कितना communication किया है, what we have shared with each other, how we have communicated, all that. So any protocol or any server that is remembering the kind of stuffs that has been exchanged in recent past, such protocol or server are called stateful protocol or stateful server. Okay, you should remember that this is the very important concept. So HTTP is stateless. It doesn't. So that means HTTP so that means HTTP server doesn't remember कि recent past में recent past I'm just saying recent past में what things have been exchanged between client and server. It doesn't remember. It doesn't bother about that also. Okay. So now question arise होता है कि why HTTP had made as developed as a stateless protocol. The idea behind making HTTP stateless is that whenever you make a protocol stateless, it becomes simple to implement. Or you can just say that it becomes a simple protocol. So because of simplicity, HTTP has been made a stateless protocol. Okay, because if you want to remember the previous communication, then you have to store a lot of things. You might have stored previous messages, clients के भी फिर address dynamically. You cannot make client changing address their address dynamically, or you have to associate a certain identifiers with the client, and each message had to be given a proper sequence number, all that. So that means in order to maintain what client and server have communicated previously, server need to maintain the history of messages that had been exchanged. The identity of the clients also need to be provided, because server need to remember to with which client I have communicated. So that means each client need to have a identifier kind of thing, and server need to remember all of those clients IDs or names that it have communicated in past. Okay, so all these things will make your protocol more complex. Okay, and once protocol become complex, obviously configuring and maintaining server also becomes complex, and whole operation of the server will become complex. So in order to avoid this complexity, the developer of HTTP have made it stateless. Okay. Any doubt? No. No, sir. Okay. So now सर we will come सर back. Yeah. सर हम लोग अपने मोबाइल में सर या फिर लैपटॉप में HTTP प्रोटोकॉल यूज करें या फिर HTTPS प्रोटोकॉल यूज किए सर हिस्ट्री में तो सब सर लोड हो ही जाता है. We will talk about that. But obviously you are correct. Server maintains histories, but the history is maintained in a different way. So actually, what a developer have just developed a basic protocol. And if you want to do additional things, you can develop the things as per your need on the top of HTTP. Okay. For example, suppose we know that HTTP doesn't offer any kind of security. We will talk about that. So if you want to get security or want to implement security, you can develop the things over on the top of HTTP, like HTTPS you have done. So what is HTTPS? On the top of HTTP, we have implemented certain protocols that implement security. So actually we have incorporated or implemented, or you can say that we have put SSL on the top of HTTP. So when we put SSL on the top of HTTP, HTTP becomes secure, and we call it HTTPS. Okay. Similarly, if you want to make your server stateful, that means it should remember to which client I have communicated and what we have communicated in the past. We can make it stateless also with the help of cookies. You might have heard the name of cookies. So cookies is a technology that can make HTTP stateful. So, however, cookie is not a part of HTTP protocol. This is cookies are implemented in form of extension. We will talk about the cookies later. Okay, now let's talk about the kind of TCP connections HTTP client and server may use. Okay, so actually TCP is a kind of connection it is a connection oriented protocol. So when HTTP uses connection, so it can use two kind of connections actually. One connection
one type of connection is called non-persistent connection, and second is persistent connection. Okay, so on the basis of these connections, you can call that I am using persistent version of HTTP or I am using non-persistent version of HTTP. So what is the difference in both of them? The difference is due to the connection. Okay, so if TCP actually non-persistent HTTP uses a non-persistent connection. So what is the meaning of non-persistent connection? Non-persistent connection means in that a connection is said to be non-persistent if when client and server establish a connection, only client and server can exchange a single object on that connection. Okay, so there is a client and a server, they established a non-persistent connection. Then what will happen? A request will be sent and then the response will be received. And response mein only one object you can receive. Only one object. Sorry. Only one object will be sent. Will be sent, and then connection will be closed. And then connection will be closed. Okay. So in case of non-persistent connection, what happens? Only one object is sent in form of response over this connection, and then connection will be closed. Now, for example, now suppose that there is a web page. So suppose let client request a web page. Let's say cusb.ac.in. Suppose client sends a request to load this web page, and now suppose that this web page contains, let's say, 4 objects. Only one to home page of university, and then suppose it contains 3 images as well. So there are 4 objects. This is object 1, this is object 2, image 1, image 2, image 3. So 3 images, 1 home page or web page is there. Or you can say that the web page contains reference to these 3 images, and you know that if you have done work with HTTP, these images are attached to the web page, and these are actually separate objects. So your web page contains, for we are assuming only, it can contain multiple objects also, or हो सकता है एक ही object हो. So suppose this object contain 4 web pages. Now suppose client request all these things. Now what will happen? Client sends a request, then initially this home page will be delivered on the first connection, and then again connection will be closed. And since you also want these 3 connections, so again these request will be sent. तो फिर से कनेक्शन इनिशिएट होगा, इस इमेज के लिए रिक्वेस्ट जाएगी, दिस इमेज विल बी डिलीवर्ड, अगेन कनेक्शन विल बी क्लोज्ड, then for this object again a new connection will be initiated, request will be sent and response will be received, again connection will be closed, and for this object again another connection will be closed, and this object will be sent over that connection, and then connection will be closed. So that means in order to get 4 objects, you require 4 TCP connections. Okay. Now this is called non-persistent connections. Now there is another kind of connection that is called persistent connection. So in case of persistent connection, what happens actually, on a single TCP connection between client and server, you can deliver, or client and server can exchange multiple objects actually, or server can deliver multiple objects within a single connection. So for example, suppose that now between the client and server the scenario is same, but connection is now persistent. So on the persistent connection, what will happen? It will send a request, response में पहले home page deliver हो जाएगा on the same connection, and then फिर object 1 के लिए request गई same connection पर object 1, that means object 2, this will be delivered, then on the same connection this object will be delivered, on the same connection this object will be delivered. So all the 4 objects can be delivered on the same connection. So only one TCP connection is sufficient to deliver all those 4 objects. The client. Okay, so this is called persistent connection. So persistent connection का मतलब यही है, persistent means kind of permanent actually. So because of persistent connection, you can deliver all the required objects
on a single connection. You don't require to close and open connection multiple times. Okay. Now question arise hota hai ki why there are two kind of connections. Okay, so there are two kind of connections. They have their own advantage and disadvantage. For example, if you see here, if you are using non-persistent connection here, then you see that in order to deliver 4 connections, 4 objects, you require 4 TCP connection. And TCP connection closing and opening process is a kind of overhead actually. Okay, in order to open a connection, you need to exchange some message, then close connection करने के लिए भी आपको कुछ message और time invest करना पड़ता है. So that means overhead will be higher in that case. But if you are using persistent connection, then only one time you need to initiate the connection and only one time you need to close the connection. So connection को open और close करने का जो overhead है वो कम होगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 4 कनेक्शंस के लिए 4 बार ओपन करना है, 4 बार क्लोज करना है. सो दैट विल रिक्वायर हायर टाइम. सो लगभग 4 गुना टाइम आपको परसिस्टेंट के अपेक्षा में लगेगा. सो 4 टाइम ओवरहेड इज देयर. बट many time this kind of functioning is important or useful, because many times what happens, client and server starts communicating but they do not interact continuously. So for example, suppose what happens, you just put a request for a web page to the server, and then server delivers you the web page, your browser displays the web page, and you just start reading the contents there. And let's say 4-5 minutes तक आपने पूरे पेज के contents को read किया, then you send another request. So in case of persistent connection, what happens, immediately आपको वेब पेज डिलीवर हुआ, कनेक्शन क्लोज कर दिया गया, एंड अब आप ऑफलाइन एक तरीके से you do not have any kind of TC connection with the server, TCP connection with the server, and you are reading your content that you have received. And then again फिर आपको content request कर रहा है, उसी time again new TCP connection will be initiated, then you will be delivered another web page, आप उसे पढ़ते हैं, फिर आप अगला request करते हैं, and so on. So इस केस में you are not putting any kind of burden on the server. But suppose that in this scenario we do not close the connection. So what will happen? Since your connection is open with the server, so server's resources are engaged with you, but you are not using the resources. So in that case, server will not provide good utilization, or the utilization of the server will become poor, or it will go down, because no meaningful work is being done for the duration of the connection. And server may not be able to know whether client is active or client have become offline or client has dead or some kind of thing. So you are just unnecessarily engaging the server, and you are not doing any kind of communication with the server. Okay, और उसी time में server could have served other people as well, है ना? So that's why many time in this such kind of scenario जहाँ पे आपको long time तक communication नहीं करना है, persistent connection, non-persistent connection is better. But many times you are continuously interacting the server. In that case, persistent connection very useful. जब आप लगातार, जैसे सोशल साइट्स में होता है, आप कहीं कुछ एकदम एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, यू आर जस्ट रीडिंग ए वेबसाइट, यूजीसी के होम पेज पर गए आप, या अपनी CUSB की साइट को आप देख रहे हैं, so you are not being engaged continuously with the server. So in that case, non-persistent connection is good. Okay, so both kind of facilities are supported by TCP. Okay, so however you can configure with that कि कौन सा आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है. सो आप ब्राउजर की सेटिंग में जाकर के कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि विच काइंड ऑफ कनेक्शन यू वांट टू यूज. ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द कनेक्शंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिले that is called during that connection setting. Okay, so we will talk about this also in detail when we will discuss TCP. So when TCP, let's talk about how TCP initiates a connection, or how a TCP connection is set up. So when suppose clients initiate a connection, generally most of the time client initiate a connection, TCP connection. So a TCP for initiating a TCP connection, a request will be sent from the client side. So client will send a request message to initiate a TCP connection with the server. Okay, so the message
at here, you will send a message that is a request. This message will travel from client to server, and it will received by the server, and then server will see content of this message. It will see who is the client that is communicating, uska IP kya hai, port number kya hai, whatever, all that. And then if server is ready to accept the connection, server will accept the connection after processing, and in the acceptance form, so acceptance के बदले में या indicating the acceptance, it will send also a response message. Okay, so here it will take some processing time, and then इस message को transmit करने का भी time लगेगा. So that's why this small gap is there. Okay, then this response message, I'm just writing request request, बस ये request response message नहीं होते हैं. We will talk about what kind of messages are they when we will talk about TCP. So it will send a response message, and once response message is received, the client have initiated, तो server side से client connection open हो गया है, connection is opened, and now client can also send acknowledgement of this response, and it can also deliver the data at the same time also. Okay, it can send acknowledgement of response indicating that I have received your connection acceptance message. That means आपने connection accept कर लिया है, ये मुझे पता चल गया है, और आप उसे सर्वर को बता रहे हैं कि I have received the message. So all these three messages will be exchanged in order to open a TCP connection, and you can see that एक मैसेज जाने का और आने का जो टाइम होता है, दिस इज कॉल्ड RTT, टू वे टाइम जो होता है, मैसेज रिक्वेस्ट जाना और उसका जवाब आने का जो टाइम होता है, इट इज वी कॉल इट RTT, राउंड ट्रिप टाइम. So you can see that one RTT you are requiring here to open a connection, and यहाँ पर हाफ ओपन हुआ है आपका कनेक्शन, एंड जब आप ये मैसेज भेज देंगे, ये जब डिलीवर हो जाएगा, तब कनेक्शन कंप्लीट ओपन माना जाता है. So that means 1.5 RTT ऑलमोस्ट. हालांकि इसमें आप डेटा भी भेज सकते हैं, तो हम इसे ना काउंट करें तो भी चलेगा, बट मिनिमम आप कहें तो इन ऑर्डर टू ओपन ए सिंगल कनेक्शन 1 RTT at least you require. Similar thing also done to close a connection. Okay, so in order to open a connection, 1 RTT time is needed, and also to close a connection, 1 RTT time is needed, and also it is need to important and need to understand that this time generally is not a constant time. Okay, it depends on the load on the network. Okay, so this time is a variable time, and sometimes this time may be small, sometimes this time may be very high. Okay, so this RTT is purely overhead, no data communication is being take place. So now you can see that 1 RTT is required to open a connection. Similarly, in order to close the connection, 3 message exchange happens. Okay, पहले आप कनेक्शन क्लोज करने की रिक्वेस्ट भेजेंगे, वहां से एक्सेप्टेंस आएगा, आप उस एक्सेप्टेंस का कंफर्मेशन देते हैं. सो 3 मैसेज विल बी एक्सचेंज. सो 1. अगर आप टेक्निकली देखें तो 1.5 RTT ओपन करने में कनेक्शन को लगता है, एंड 1 RTT कनेक्शन को क्लोज करने में लगेगा. ठीक है, 1 RTT टाइम जो है कनेक्शन को क्लोज करने में लगेगा. सो रफली 3 RTT टाइम आपको एक कनेक्शन के ओपन और क्लोज करने में लग जाता है, एंड दिस इज कंप्लीटली काइंड ऑफ ओवरहेड. ओके, सो जनरली मेनी टाइम जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरेक्शन फ्रीक्वेंट होता है, तो ये RTT ओवरहेड हो सकता है. इट कैन बी वेरी हाई, क्योंकि आप डेटा कम्युनिकेशन कम कर रहे हैं और आप ये टाइम जब लगा रहे हैं, तो इट विल बिकम ए ओवरहेड. So you have to carefully use or decide whether we need to use persistent connection and or non persistent connection. Persistent connection में क्योंकि एक ही बार कनेक्शन ओपन और क्लोज होता है, तो ओवरहेड आपका केवल ये पर कनेक्शन ओवरहेड होता है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं 9 कनेक्शन होंगे आपके, 9 ऑब्जेक्ट को डिलीवर करना है, तो 27 RTT हो जाएगा 9 ऑब्जेक्ट को डिलीवर करने में. और जबकि आप अगर वो 9 ऑब्जेक्ट को एक ही कनेक्शन में डिलीवर कर दें, तो 3 RTT का ही रहेगा. 1.5 ओपन करने के लिए कनेक्शन को, 1.5 RTT कनेक्शन को क्लोज करने के लिए. ओके, सो ये ओवरहेड को कंसिडर करके ही हम वेब सर्वर साइड में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. सो जनरली समटाइम्स मेनी टाइम वेब सर्वर एंड क्लाइंट इंटेलिजेंटली डिसाइड्स कि किस टाइप का कनेक्शन सेटअप करना है. ओके, now let's talk about the kind of request and response messages that are exchanged between client and server. I have already told you that HTTP only allows 2 kind of messages: request message and response message. Request message is sent by the client,
and response message is sent by server. So these messages have a fixed format actually. Okay, as I told you that it is every protocol that defines the syntax of the messages exchange. What will be the syntax of the message? The protocol decides. Okay, so similarly, HTTP also decides the formats of each of the messages that can be exchanged on between the client and server. Okay, so let's talk about the HTTP request message. This is the one of the example request message that is sent by client. So let's see uh, what are the components of this message. So you can see that this line, the first line, is actually called request line. You might have seen that this is the request line that indicates the kind of request client is making. Okay, since this is a request message, so obviously some request will be sent by the client. So this request line indicate what kind of request is being made by the client. So this request line contains three fields actually. This field, you see that here get is written. So this field is called method. So here method is get. We will talk about these methods. Then the second part is URL. So this URL is actually address of the content on the server. So you see that here it is a relative address, but sometimes it can be absolute address also. So this is the URL of the object that has been requested. And then this is the version of the HTTP protocol. तो HTTP currently आप देखेंगे HTTP 2.0 आप यूज कर रहे हैं, सॉरी HTTP 2. और 2 पॉइंट नहीं कह सकते, HTTP 2 आप ब्राउजर में जाकर देख सकते हैं और ब्राउजर कौन सा वर्जन यूज कर रहा है. ओके, HTTP 2 वर्जन है, तो इसमें 2.1 2.2 हो सकता है. So this message is indicating that client is using HTTP 1.1 protocol. Okay. So this is your request line, and that request line have three fields: method, URL, and then version of the protocol. This is version. Then after this /r/n, these are called line feed characters. Sorry, carry is written a line feed character or line change character, you can say. The combination of these two characters is called line change characters. Okay. /r/n आप सब लोग जानते हैं, सी में आपने पढ़ा होगा. Then the second line and the second and other lines are called up to this point are called header lines. Okay, these lines are called header lines, and the number of lines are variable actually. So sometimes your message may contain 2 header lines, 4 header lines, or so on and so on. So these number of lines will be variable. It will depend on the message. So after some header lines, you will see that this line ends here, and then there will be another line change. So लगातार दो line change होंगे. That means it indicates that your message is end, or say header is end. So this is actually header part, complete header part. So this whole part is called header of your message. Sorry. So you know that आपका जो message है, anytime network में message contains two parts. First part is data, second part is header, जो कि front में होता है. So this is your header part पूरा /r/n से दो continuous जो line change है. There are two line change actually, two line change characters हैं. इसके बाद यहाँ पर generally आपकी body होना चाहिए, but since this is a request message, so request message doesn't contain a body. What rare cases में request message में कोई भी data होगा. It just have an empty body. Okay. Now let's talk about these are some typical header lines that are used in messages. Here host means it represents to which host the request need to be sent. So it is actually indicating the server, to which server this request is made. So that means URL of the server. You can say that this is the host name, IP address भी हो सकता है यहाँ पर. So this is www.net.cs.umass.edu. This is the address of the server actually. Then this is user agent. This line indicates user agent. User agent means which kind of client is being used. So here you see that Firefox
Firefox 3.6.10. So Firefox is the type of browser. So ये अपने यहाँ पे this line indicates which browser is being used by the client to make a request, and उसका वर्जन यहाँ पीछे लिख के आता है. Then kind of response server client accepts. Client को किस टाइप का request acceptable है? HTML text HTML. ठीक है, ये kind of text जो formats वो receive करता है client, ये वो मैसेज है. Accept language, in which language client can interact. ये है language, English US और English. Accept encoding, कौन सी encoding वो जो ना accept करेगा. So various kind of encodings are there. Character set कौन सा यूज एक्सेप्ट कर सकता है क्लाइंट. सो हियर देयर विल बी अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर सेट. जनरली आप देखेंगे UTF-8 और UTF-16 बहुत कॉमन कैरेक्टर सेट होता है, बट देयर मे बी अनदर कैरेक्टर सेट दैट कैन बी सपोर्टेड बाय क्लाइंट. सो क्लाइंट हियर इज लिस्टिंग व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर सेट आई कैन रिसीव. Keep alive. So keep alive indicates that client is just saying that that do not close the connection. So client is requesting that I am willing to use persistent connection actually. ठीक है, ये कीप अलाइव फील्ड का मतलब ये कि persistent कनेक्शन है, और ये टाइम बता रहे हैं कि कितने टाइम तक आपको कनेक्शन को ओपन रखना है. तो दिस इज द 115 यू कैन से दैट मिली सेकेंड, और आई गेस मिली सेकेंड में टाइम होता है ये. ओके, सो दिस इज द टाइम के इतने टाइम तक मैं क्लाइंट कुछ भी ना भेजे सर्वर को तब भी कनेक्शन ओपन रहे. दैट मीन्स कनेक्शन इमीडिएटली क्लोज नहीं होगा. सो दैट मीन्स दिस इज ए काइंड ऑफ persistent connection. Okay, this request is for a persistent connection, and connection बताता है कि this is so both these fields jointly actually indicates the persistent connection is needed. Keep alive का मतलब है यहाँ, और this is indicating that connection need to be opened, and keep alive जो field है ये बताता है कितने टाइम तक क्लाइंट इनएक्टिव रहेगा तब तक आपको कनेक्शन ओपन रखना है. ओके, हाँ. सो नाउ इतने टाइम तक अगर क्लाइंट की तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आती है, सर्वर में क्लोज द कनेक्शन. ओके, इससे पहले सर्वर क्लोज नहीं करेगा. हाउएवर दिस इज जस्ट ए रिक्वेस्ट. इट मे बी द केस दैट सर्वर मे नॉट एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट. So this is your format of the message. Now it is important to understand you that ये जो इसमें कुछ fields दिए ये ओनली स्मॉल सेट ऑफ फील्ड्स हैं. आपके जो HTTP प्रोटोकॉल के आपका RFC में जाएंगे HTTP में, then you will find out a very very large set of header lines are possible. Okay, so वो not always all the header lines are used. Okay, कुछ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, कुछ रेयरली यूज होती हैं. सो दे यू कैन रीड अबाउट दोज हेडर लाइंस इन द करस्पॉन्डिंग RFC ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल. ओके, सो दिस इज द जनरल सिंटैक्स दैट आई हैव टोल्ड यू. मेथड, ये जो हेडर लाइन आपकी रिक्वेस्ट लाइन है उसमें मेथड रहेगा, URL देन वर्जन, एंड दीज a variable set of header lines will be there, and then there are two continuous line feed character, एक तो इस लाइन के एंड में, and then एक empty. So this line empty line change character indicates that the header has been completed. Okay, so ये header का end दिखाता है actually, and then इसके बाद body start होती है. So generally request message में body आपकी empty होती है. Okay, now सर SP क्या थी? SP थी सर, ऊपर में SP space SP stands for space. Okay, now let's talk about the kind of methods that can be used in at this place. Okay, अभी हमने एक example देखा उसमें get method था, but actually there are multiple methods are there. So we will talk about only 5 methods. 2 methods और हैं, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे. They are used rarely. So one is there are actually 2 mainly important methods that are used. One is get, आपने देखा अभी get, and post method is also there. So if you have done HTML or you have worked with any kind of scripting or web kind of web development language, you may be familiar with post and get method. Okay, so both post method and get method are used to send or send some input parameters to the client. Okay, so actually sorry, server. So client want to send some input to the server, you can use either get method or post method. Okay, so for example suppose that आपने कई बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा. यू हैव आल्सो डिड द सेम फॉर एडमिशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन. So you provide some data into the fields that have been provided on to a web page, है ना. आपने अपना नाम भरा होगा, फादर नेम एंड एज, ऑल दैट, डेट ऑफ बर्थ,
So when you submit the web page, the parameters that you have entered into the boxes need to be delivered to the server. Yes. So those data can be sent in two ways to the server. One is using get, second is using post method. Okay, so both methods work differently. So suppose that if you use get method for uploading the data to the server, so what get method does, get method adds all those parameters in your URL this way. So for example, suppose that आप दो parameters भेज रहे हैं. I am just taking an example, monkey and banana. आपके पास दो कॉलम, दो टेक्स्ट बॉक्स थे, उसमें आपने दो पैरामीटर्स या दो वैल्यूज फिल की. So those values will be added to your URL. So suppose this is your URL www.sometime.com/animal search. So this was the URL. This was your URL. Then there अब इसके बाद जो पार्ट है, this is your kind of query string. Generally आप इसे query string बोलते हैं. This is called complete जो होता है, this is called query string. आपने अगर PHP या कोई लैंग्वेज यूज की होगी तो उसमें आपने ये टर्म यूज की होगी, query string. ओके, सो नाउ ये आपका तो यूआरएल वाला पार्ट हो गया वेब पेज का, सर्वर साइड का, जिस वेब पेज को आपको ये डेटा भेजना है. देन क्वेश्चन मार्क के बाद यू विल लिस्ट द पैरामीटर्स. पहला पैरामीटर मंकीज, देन एंड. सो एंड बिहेव्स लाइक ए सेपरेटर अमॉन्ग पैरामीटर. ओके, सो मल्टीपल पैरामीटर, सपोज एक और पैरामीटर होता तो आप यहाँ एंड लिख के तीसरा और वैल्यू प्रोवाइड कर देते. चौथा और एक और होता तो एंड लगा के आप उन्हें कंबाइन करते जाते. सो दिस इज द वे यू कैन सेंड डेटा. सो व्हेन यू यूज गेट मेथड, योर डेटा सेंट यूजिंग दिस query string. Actually your data is concatenated by following proper format with the URL. okay, so कई बार आप देखेंगे, आप अगर आपने वेब स्क्रिप्टिंग की होगी तो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ URL. आपको वो URL में दिखाई देंगे आपके वैल्यूज. ओके, सो whenever you want to submit something and you can use this method, but generally this method is not preferred, because if you are using some private or sensitive data, anybody can see this data. Okay, because it is added to your URL in a simple text format. Okay, so there is another method that is called post method. So using post method, you can send the same data items, but you do this in a encrypted form. So post method में parameters भेजते हैं. So all the things are encrypted actually. और यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसके बाद जब URL होगा post method में, that will be a different kind of URL, and आपको यहाँ पर कुछ random type के characters दिखाई देंगे. You will अगर आप Gmail अपना खोलेंगे ना तो आप देखिएगा यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं तो आपको URL में कुछ रैंडम कैरेक्टर्स ऐड हो जाते हैं. दैट मीन्स आप अपने URL और पासवर्ड को इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड कर रहे हैं. सो पोस्ट मेथड अलाउ यू टू सेंड डेटा सिक्योरली. ये तो एक डिफरेंस हो गया. दूसरा, गेट मेथड में आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही भेज सकते हैं. पोस्ट मेथड में कोई लिमिट नहीं है. ओके, सो व्हेन यू आर डूइंग वेब डेवलपमेंट, जनरली if you want to send data securely, you use post method, otherwise you can go for get method. So दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है जनरली. इनके अलावा दोनों का काम है डेटा सबमिशन सर्वर साइड पे, स्क्रिप्ट को डेटा भेजना है. यू कैन यूज आइदर गेट मेथड और पोस्ट मेथड, बट जनरली पोस्ट मेथड इज प्रेफर्ड इफ यू आर सेंडिंग सम सेंसिटिव और प्राइवेट डेटा. ओके, सो दीज आर द टू मेथड्स. सो HTTP का जो 1 वर्जन था उसमें ये तीन ही मेथड थे. बाद में एक मेथड और ऐड किया गया, पुट मेथड. सो गेट और पोस्ट हो गया. हेड मेथड जो है जनरली आप इस्तेमाल करते हैं सर्वर से रिक्वेस्ट. केवल आपको मान लीजिए इफ यू आर जस्ट वांट टू टेस्ट द सर्वर, योर सर्वर इज प्रॉपरली रिटर्निंग द आंसर और नॉट. सो डिबगिंग में या आपके ट्रबल शूटिंग में यू कैन यूज हेड मेथड. So when you use head method in your request, then server just send a empty response message. ठीक है, server will send just an empty response message. It will not send any kind of object जो आपने request किया है. So this method is generally used for debugging. Okay, and there is also another method, put method. अगर आपको server पर कुछ upload करना है, so suppose you are a web developer और आपको कुछ PDFs, कुछ images अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने हैं. You are developing website. So you can use put method. Similarly, delete method can also be used to delete contents from the server. So ये जो put और delete methods हैं, these are used by web developers, not normal users. ठीक है.
सो एक्चुअली ये तीनों जो मेथड्स हैं ये वेब डेवलपर्स यूज करते हैं, वेब डेवलपर्स यूज करते हैं, नॉर्मल यूज में नहीं यूज होते हैं ये। वेब had there then there is also another method track. So these methods are used by web developers, not normal use नहीं होते हैं. So these are the methods that are defined by HTTP. Okay, now let's talk about HTTP response message. So in case of HTTP response message, again it have various fields. Actually mainly 3 fields are there. You can divide it into 3 fields. पहला जो field है आपका, it will, you can see that this is the line that is called status line. So your response starts with a status line. And status line actually indicates the kind of response you have received. Or as a client, suppose you are a client, so it will indicate the client kind of response from the server. So kind of response means whether it is a normal response or there is any error kind of thing. ठीक है, so normal response है या error है, that will be indicated by this status line. So status line में actually three things are there. पहला है protocol. कौन सा प्रोटोकॉल है, सर्वर जो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो सर्वर कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है. देन दिस इज द स्टेटस कोड, इट इज कॉल्ड स्टेटस कोड. ये रिस्पॉन्स को इंडिकेट करता है, काइंड ऑफ रिस्पॉन्स. सो सर्वर कैन गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स. सो दिस स्टेटस कोड, ईच रिस्पॉन्स, पोटेंशियल रिस्पॉन्स हैव ए यूनिक कोड. ध्यान रखना, सर्वर कई सारे रिस्पॉन्स आपको दे सकता है कई तरीके के. सो एवरी रिस्पॉन्स हैव ए यूनिक कोड, so that this code indicates that response. Okay, तो इस स्टेटस कोड का मतलब होता है ओके, दैट मींस रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड एंड आई एम डिलीवरिंग यू द कंटेंट. ठीक है. और ये करस्पॉन्डिंग होता है स्टेटस मैसेज. सो एवरी रिस्पॉन्स कोड हैज एसोसिएटेड स्टेटस मैसेज दैट इंडिकेट्स व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज दैट. ओके, सो ये दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं. ठीक है, हमेशा जब 200 आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटस लाइन जो है, जो स्टेटस, जो क्या कहते हैं, सॉरी, स्टेटस मैसेज है, दैट इज ओके. ओके, सो ये जो लाइन है ये आपकी इंडिकेट करती है रिस्पॉन्स. देन देयर आर सम हेडर लाइंस एंड अगेन दीज हेडर लाइंस आर वेरिएबल इन नेचर. कुछ हेडर लाइंस कुछ मैसेज में प्रेजेंट होंगी, कुछ नहीं होंगी. एंड देयर इज अ वेरी वेरी लार्ज लिस्ट ऑफ हेडर लाइंस इफ यू सी द कंप्लीट RFC, बट नॉट ऑल हेडर लाइंस आर यूजफुल. कुछ हेडर लाइन प्रेजेंट नहीं होती. नाउ this is the line that indicates date and time of your response. So response का time यहाँ पर mark है, this is the day, Sunday, then date 26 September 2010, and this is the time of the response. server का जो time है GMT time है, so the time is indicated by the server. server ने date and time indicate किया है कि at what time, date and time this response message was sent. Then this is the information regarding server. Who is the server? So server is giving its identification, Apache. That means this response was generated by Apache server. अगर Lynx server ने भेजा है तो Lynx नाम लिखा होगा, या IIS ने लिखा है तो यहाँ IIS लिखा होगा. If server जो respond कर रहा है, that is the software that is being used is IIS, Internet Information Server of Microsoft. Then the name of the server will be there. Majority cases में आपको Apache ही मिलेगा. Then this is the version of the Apache and this is the ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर Ubuntu होगा तो यहाँ Ubuntu होगा, विंडोज है तो विंडोज लिखा होगा, वट. देन लास्ट मॉडिफाइड. सो लास्ट मॉडिफाइड फील्ड इंडिकेट दैट वट एवर कंटेंट इज बीइंग डिलीवर्ड. इसके साथ जो डेटा मिल रहा है, लेट्स से आप इमेज भेज रहे हैं रिस्पॉन्स में, तो ये इमेज लास्ट टाइम कब मॉडिफाई हुई थी, दैट इज द टाइम. और या कोई कंटेंट था जिसे डिलीवर कर रहा है सर्वर, वो लास्ट टाइम कब मॉडिफाई हुआ था, सो उसकी मॉडिफिकेशन डेट इज दैट, इतनी डेट के बाद वो मॉडिफाई नहीं हुआ है, ये मॉडिफाइड डेट है, डेट एंड टाइम कंप्लीट है. देन टैग. कई बार एक कंटेंट के कई सारे वेरिएशन होते हैं, तो ईच कंटेंट में हैव टैग. ठीक है, जैसे एक ही इमेज के कई वर्जन हो सकते हैं, तो हर वर्जन का एक यूनिक टैग होता है, दैट इज कॉल्ड ई टैग. तो ये उसका टैग है. एक्सेप्ट रेंजेस, बाइट्स, मतलब डेटा जो डिलीवर हो रहा है उसकी रेंज क्या है, बाइट है. देन कंटेंट लेंथ, कितने लेंथ का है डेटा. कीप अलाइव, कनेक्शन को अलाइव करना है. टाइम आउट ड्यूरेशन, ये टाइम आउट ड्यूरेशन है कि इतने टाइम बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा. ठीक है, टाइम आउट हो जाएगा अपने आप. अगर आप सर्वर इतने टाइम तक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, सॉरी क्लाइंट कोई भी दोबारा रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, तो सर्वर विल क्लोज द कनेक्शन. मैक्सिमम रिक्वेस्ट एक ही कनेक्शन पर कितनी भेजी सकती है, दिस इज द नंबर. हाउ मेनी रिक्वेस्ट
कैन क्लाइंट सेंड ऑन दिस कनेक्शन मैक्सिमम, इसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। कीप अलाइव, आप जानते हैं किसके लिए, परसिस्टेंट कनेक्शन के। कंटेंट टाइप, कंटेंट किस टाइप का डिलीवर हो रहा है, अगर यहाँ पे HTML टेक्स्ट HTML है तो टेक्स्ट HTML लिखा होगा, अगर इमेज है तो इमेज लिखा होगा, ठीक है। तो किस टाइप का कंटेंट डिलीवर हो रहा है। देन दो लाइन चेंज करेक्टर होगा, ये लाइन के एंड में होता ही है, एंड देन एक एम्प्टी लाइन होती है, लाइन चेंज करेक्टर इसको बोलते हैं, एंड इसके बाद आपका डेटा आएगा। सो हियर डेटा विल बी देयर, सो वट एवर रिक्वेस्टेड डेटा इज देयर दैट विल बी देयर। सो दिस इज द, सॉरी इसमें जनरल फॉर्मेट रिस्पॉन्स की नहीं दी है। सो अगेन 3 फॉर्मेट है, आप अगर डायग्राम में देख लीजिएगा, ये एक लाइन होती है, ये कंपल्सरली होती है, ये लाइंस आपकी वेरिएबल नंबर ऑफ होती हैं। सो अगेन योर रिस्पॉन्स हैव 3 रिस्पॉन्स मैसेज हैव 3 फील्ड्स, पहला स्टेटस लाइन, सेकंड सेट ऑफ हेडर लाइंस, देन एक एम्प्टी लाइन होगी, एंड देन उसके बाद डेटा होगा। ओके, देन जैसे मैंने कहा कि सर्वर सेंड सम सर्टेन रिस्पॉन्सेज, सो सम रिस्पॉन्सेज हैव, ईच रिस्पॉन्स हैव डिफरेंट यूनिक कोड। सो 200 ओके, इसका मतलब क्या होता है 200 ओके का, रिक्वेस्ट सक्सीडेड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लेटर इन दिस मैसेज, दैट मीन्स आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है एंड आई एम सेंडिंग यू द रिक्वेस्टेड डेटा दैट इज अटैच्ड विद द मैसेज। 301 आता है, इसका मतलब डेटा मूव हो गया है परमानेंटली। 40 बैड रिक्वेस्ट, दैट मीन्स सर्वर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट, क्लाइंट को आप बता रहे हो कि आपकी रिक्वेस्ट मुझे समझ में नहीं आई। 404, कई बार आपने ये सुना होगा, देखा होगा, 404 नॉट फाउंड, इसका मतलब वट एवर डॉक्यूमेंट यू हैव रिक्वेस्टेड आई हैव नॉट फाउंड इट ऑन सर्वर। 505 HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड, दैट मीन्स क्लाइंट आपका जो वर्जन इस्तेमाल कर रहा है सर्वर उसे सपोर्ट नहीं करता है। So these are the some of the messages, status message. You will find out whole list of messages, आपकी कुछ बुक्स में और भी दिए हैं, एंड बाकी के आप अपने जो करस्पॉन्डिंग जो PDF है आपकी RFC उसमें मिल जाएगा। So I will suggest you to go through all those messages. Just have a look on those messages. जरूर नहीं है सारे आपको समझ में आए, बट बहुत कॉमन टाइप के मैसेज आपको सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता होगा ये वाला, या सबसे ज्यादा देखने को जो मिलता है ये आपको मिलता है 404। आपने कई बार देखा होगा, many time you request a web page, then you just get this kind of message, वहां नीचे अपाचे सर्वर या उसका नाम लिखा होता है। तो जब कंटेंट नहीं मिलता है जो आपने रिक्वेस्ट किया है, then you get this kind of message, so indicate करता है कि आपके रिक्वेस्ट में एरर है। ओके, सो आई विल सजेस्ट यू जस्ट गो थ्रू द काइंड ऑफ मैसेजेस। इसमें जो पहला लेटर है उसका मीनिंग होता है, जितने भी 2 से लेटर 2 से जो कोड शुरू होते हैं, दैट मीन्स योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल। ओके, 200 और 201 202 समथिंग लाइक दैट। 3 से जो रिक्वेस्ट मैसेज होते हैं उसका मतलब है एरर, देयर इज नो एरर एक्चुअली, बट कंटेंट हैज बीन मूव्ड, सो देयर इज अ काइंड ऑफ रीडायरेक्शन एक्चुअली, एक जगह से दूसरी जगह कंटेंट शिफ्ट कर दिया गया, आपको इस URL पर नहीं इस URL पर मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। 4 का मतलब होता है, जब 4 आता है दैट मीन्स जो एरर से रिलेटेड मैसेज होते हैं, जिसमें पहला लेटर 4 हो, दैट मीन्स ऑल आर द मैसेजेस और स्टेटस मैसेजेस दैट इंडिकेट्स एरर। Okay, 5 generally error को सब 5 also represent error, but that is different kind of error. ये content से related error नहीं है, these are the errors related to software. सर 301 में वो उसमें नहीं समझ में आया, वो उसमें क्या होता है? 300 means जब आपका redirection हो, redirection मतलब server is saying kindly go to this web page. Sometimes क्या होता है, आपके content at some place was available, लेकिन वो फाइल को मूव कर दिया गया और दूसरे URL पर शिफ्ट कर दिया गया है, एंड समटाइम्स द फाइल मे बी शिफ्टेड ऑन सम अदर सर्वर आल्सो। तो उस केस में आपको रीडायरेक्टेड एड्रेस दिया जाता है कि प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दिस एड्रेस टू रिसीव दिस कंटेंट, रीडायरेक्शन के लिए। so that means the server is saying go to this URL in to get this request fulfilled, इस URL पर जाइए। तो समटाइम्स रीडायरेक्शन के लिए जो मैसेज होते हैं वो इसके लिए है, ठीक है। उस केस में जनरली वो आपको URL भी बताता है सर्वर, अगर अवेलेबल है। सो एक एग्जांपल है, इसमें भी कई सारी कैटेगरी हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द ऑल द मैसेजेस, और वेरी कॉमन मैसेज जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, या फिर आप कई वेबसाइट्स हैं geeks4geek.com या ट्यूटोरियल पॉइंट, उन पर आपको बहुत कॉमनली यूज होने वाले URL उनके स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो यू कैन गो थ्रू दैट। आई विल शेयर सम ऑफ द रेफरेंस फॉर यू। ओके, any question? Now let me introduce you with cookies. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके I will stop.
Nice. So as I told you that HTTP is a stateless protocol. So that means server does not recognize the client, or it doesn't actually uh, uh, remember what communication has been done with a particular client in recent past. So nutshell आप कह सकते हैं कि server is not interested in identifying the client. उसे client की ID से मतलब नहीं है. तो एक ही क्लाइंट को वो सेम डेटा बार बार दे सकता है, कितने भी टाइम दे सकता है. सर्वर डजंट बॉदर अबाउट दैट बिकॉज इट डजंट रिमेंबर इट्स क्लाइंट. But many times in many services or web servers, it is always desirable for business purpose actually also. It is desirable that server should remember their clients. है ना? For example, suppose you have a shopping site, like जैसे Amazon का example ले लेते हैं, Amazon और Flipkart. So when you go to Flipkart, you might have seen that if you search, let's say शू वन डे, आपने अकाउंट नहीं बनाया है, अज्यूम करें अकाउंट अलग चीज है, अकाउंट बना लेना एक अलग चीज है. विदाउट अकाउंट ऑफ नॉर्मल यूजर की तरह यू जस्ट गो ऑन द फ्लिपकार्ट फर्स्ट टाइम एंड यू जस्ट सी ए सेट ऑफ शूज देयर. ओके, नाउ कुछ महीने बाद आपने अपनी सेम मशीन से फिर से फ्लिपकार्ट खोला. सो देन यू विल सरप्राइज टू सी दैट what the shoes that you saw 1 month before, the Flipkart will remember that that time you just go through or you just watch and go through these shoes, and it will also provide similar recommendation to you that you are looking for shoes. So it will also offer some shoes on the basis of past time आपने किस टाइप के जूते देखे थे, उसी हिसाब से आपको वो रिकमेंडेशन देगा. You might have observed this kind of stuff on any shopping site. And sometimes on Google News or many time you go to a news portal, then कुछ इंटरेस्ट की जो न्यूज आपने देखी थी उसी टाइप की न्यूज वो आपको आगे से दिखाना शुरू कर देगा. So how this happens due to cookies. So a server that supports cookies can do that. Okay, now cookies के केस में ध्यान रखना, in this context we are not talking about a registered user. जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं वेबसाइट के साथ किसी के साथ, तो आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, आपके यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम से आइडेंटिफाई हो जाते हो आप. बट कुकीज वर्क्स वेयर देयर इज नो यूजर नेम इज गिवन टू ए यूजर. आप एक अननोन विजिटर है. सो हाउ द सर्वर आइडेंटिफाइज यू in that case, since you are not a registered user, still how they identify you is because of cookies. So many times these sites actually uses concept of cookies to recognize their visitors. कैसे? Let's talk about. So यहाँ पे इन्होंने, this is the author from US. So US में eBay काफी popular है, so he have taken example of eBay. I will just would like to take the example of Flipkart, जो ज्यादा कॉमन है. Everybody knows Flipkart or Amazon, है ना? So suppose that you went to Flipkart first time, आपने कोई अकाउंट नहीं बनाया है, you just open Flipkart from your browser and you see set of shoes. वहां पे आपने कुछ शूज ब्राउज किए and maybe suppose that आपने कुछ शर्ट्स भी ब्राउज की, कुछ शर्ट्स आपने खास तरीके की देखी. now and then you close the website and जब आप एक महीने बाद जाते हैं तो वो फिर से आपको वही रिकमेंडेशन दिखाने लग जाता है. तो how this thing happens? So actually this happens because of cookies. So suppose that your web browser जो है कुकीज को सपोर्ट करता है. whatever web browser you are using, generally all the modern web browser supports cookies. हाँ ठीक है. और एक चीज और याद रखना है, कुकीज को आप डिसेबल कर सकते हो. So if you have not disabled the cookies, suppose that I'm assuming you have not disabled the cookies. So first time जब आप Flipkart के पास जाएंगे, so Flipkart have its database. I don't want to use this diagram, so let me take on another page. So this is your web browser. Let's say आप Google Chrome यूज कर रहे थे जो कि कुकीज को सपोर्ट करता है. ओके, और Google Chrome से आपने क्या किया था, फ्लिपकार्ट का जो वेब सर्वर है, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स साइट है, आप जानते हैं, फ्लिपकार्ट के सर्वर पर गए एंड फ्लिपकार्ट सर्वर हैव इट्स डेटाबेस इन बैकग्राउंड. ठीक है, डेटाबेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सॉरी, ओके, बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है डेटाबेस से. ओके, सो दिस इज फ्लिपकार्ट सर्वर एंड यू आर द क्लाइंट दैट इज यूजिंग. सो आपने क्या किया, एक वेब इसको कनेक्शन आपने HTTP के थ्रू यू कॉन्टेक्टेड द फ्लिपकार्ट सर्वर and you send a request message.
और आपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेज से कम्युनिकेशन किया। ओके, सो उसमें आपने कुछ शर्ट्स देखे फ्लिपकार्ट पर एंड यू जस्ट सॉ सम शूज ऑल्सो एंड आपने कनेक्शन क्लोज कर दिया, दैट मीन्स यू जस्ट गो ऑफलाइन। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन हुए तब आपके ब्राउजर एक्चुअली कुकी सपोर्ट कर रहा था, तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया, फ्लिपकार्ट सर्वर जस्ट असाइंड ए यूनिक आइडेंटिफायर। जब आपके यहाँ से रिक्वेस्ट आई, आपके कम्युनिकेशन जब चल रहा था, सो यू आर गिवन ए यूनिक आईडी। सो लेट्स से दैट यूनिक आईडी वाज 10101, ठीक है, सम नंबर, एक यूनिक नंबर आपको असाइन कर दिया। तो दैट इज योर सुपर की या प्राइमरी की। आपका डेटाबेस में एक रिकॉर्ड बना दिया उसने, अपने पास डेटाबेस है फ्लिपकार्ट के सर्वर के पास, तो उसमें आपकी एक एंट्री कर दी और जो जो वेब पेज आपने देखे सब इस डेटाबेस में आपकी आईडी के करस्पॉन्डिंग सेव हो गए। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, डेटाबेस की स्ट्रक्चर क्या होगी, आई जस्ट वांट टू पॉइंट इट आउट दैट द all information what you have done or what you have browsed, all the web pages or their references are stored against your unique key, ठीक है। एक जो आपको की आईडी पर असाइन की थी उस आईडी से आपको वो असाइन कर दिया गया। एंड फ्लिपकार्ट जब आपको रिस्पॉन्ड कर रहा था तो वेब सर्वर आपको इस की को सेंड करता है साथ में, जब रिस्पॉन्स भेजेगा इट विल जस्ट गिव यू दिस कुकी आईडी, आप इसे कुकी आईडी बोल सकते हैं। ओके, सो ये यूनिक नंबर था आपके ब्राउजर ने भी स्टोर करके रख लिया अपने पास कुकीज फाइल में। तो आपके ब्राउजर जहाँ पे इंस्टॉल होता है वहां पे कुकीज का एक फोल्डर है, उसमें उसने एक फाइल बनाई फ्लिपकार्ट के लिए और उसमें ये आईडी सेव करके रख ली, ठीक है। सो नाउ ये जो आईडी क्रिएशन है, दिस आईडी से जो इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही है, आप उन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को आप कुकीज बोल सकते हो। ओके, सो नाउ सिंस योर ब्राउजर हैव मेंटेन्ड ए आईडी, किसके लिए, फ्लिपकार्ट के करस्पॉन्डिंग। हाँ, हालांकि अगर कोई दूसरी साइड जाएगी तो उसकी एक और सेपरेट कुकी फाइल बनेगी, उसमें उसने जो आईडी दिया था वो मेंटेन होगी। लेट्स से अमेजन में आपने ब्राउज किया तो अमेजन भी कुकी मेंटेन करता है, तो आपके साइट में अमेजन के लिए कुकी फाइल अलग से बन जाएगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लिपकार्ट कुकी फाइल। तो ये फाइल आपके यहाँ सेव है, सपोज दैट, और आपने सपोज इसे डिलीट नहीं किया है, कुकीज आपको आपने क्लियर नहीं किए। सो नाउ लेट्स से आफ्टर 1 मंथ आपने फिर से फ्लिपकार्ट को कॉन्टेक्ट किया। सो when you will contact फ्लिपकार्ट, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्राउजर है ये कुकीज आईडी अपने रिक्वेस्ट मैसेज में मेंशन कर देगा 10101, जहां भी जाएगी एक फील्ड होगा, वी विल टॉक अबाउट सेट कुकीज, और वो कुछ फील्ड HTTP में है, उसके थ्रू आप ये कर सकते हो। सो ये फील्ड में आपने अपनी आईडी मेंशन कर दी, और जब ये आईडी मिली फ्लिपकार्ट सर्वर ने आईडी एक्सट्रैक्ट की और इस आईडी से आपका डेटाबेस से डेटा निकाल लिया कि आपने पास्ट टाइम आपकी पूरी हिस्ट्री डेटाबेस में सेव थी विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी। सो ये की तरह काम करती है ये आईडी, और यूनिक है। फ्लिपकार्ट हर यूजर को डिफरेंट आईडी देता है। ओके, 1 मिनट। सर सर Okay, so once your browser quotes this ID, Flipkart will recognize you and it will retrieve your history कि आपने पास्ट टाइम क्या कम्युनिकेशन किया था, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस हिस्ट्री फ्लिपकार्ट नोज कि आपने लास्ट टाइम कौन कौन से शूज विजिट किए थे, कौन कौन सी सर्च देखी थी, एंड वो इस पर डेटा माइनिंग या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगा सकता है, एंड उसके बेसिस पर इट कैन रिकमेंड सर्टेन थिंग्स टू यू एंड इट विल ऑल्सो रिकॉग्नाइज यू। हालांकि आपके नाम से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि आप कौन है, बट इट इज अंडरस्टैंडिंग दैट आपने 1 महीने पहले फ्लिपकार्ट से कम्युनिकेट किया था। सो अल्टीमेटली इट इज रिकॉग्नाइजिंग यू। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नाउन एज कुकीज। सो कुकीज के केस में क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही है, सो इस तरीके से आपको देख सकते हैं कुकीज में आर हेल्पिंग सर्वर टू मेंटेन स्टेट ऑफ द क्लाइंट। Okay, so now your protocol, once you added cookies over HTTP, your protocol becomes stateful, and now you are able to remember कि आपने इस क्लाइंट से कब कम्युनिकेट किया था, एंड उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप मेंटेन कर पा रहे हैं। सो कुकीज मेक्स योर प्रोटोकॉल स्टेटफुल, एंड नाउ सर्वर विल बी एबल टू रिमेंबर यू। सो कुकीज के लिए आप क्या क्या करें, आपको एक आईडी मेंटेन कर रहे हैं। सो कुकीज को क्रिएट करने के लिए सर्वर जो आपका वेब HTTP प्रोटोकॉल, इट सपोर्ट सर्टेन मैसेजेस हेडर रिक्वेस्ट मैसेज में और रिस्पांस मैसेज में कुछ एडिशनल हेडर ऐड करना पड़ते हैं दैट हैव बीन एडेड
in HTTP in form of extension. So पहला है set cookie. ओके सो जब ब्राउजर को आप पहले रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सर्वर जब फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स देता है, आपको मालूम है कि आपने कुकीज को ऑफ नहीं कर रखा है, सर्वर विल बी एबल टू नो, सो इट विल सेंड सेट कुकीज मैसेज. तो सेट कुकीज मैसेज में एक आईडी आपको असाइन करेगा. सो दिस सर्वर इज सेइंग दैट आई हैव गिवन यू दिस आईडी एंड योर क्लाइंट जो हो ब्राउजर है इट विल सेव दिस आईडी. जैसे यहाँ देखा अमेजन की कम्युनिकेशन सपोज हो रहा था तो अमेजन की आईडी ये है, ईवे से कम्युनिकेट कर रहे थे तो ईवे की आईडी ये है. तो ये कुकी फाइल्स बनती हैं आपके ब्राउजर, आपकी लोकल मशीन पर, और दिस कुकीज फाइल आर सेव्ड बाय द ब्राउजर. ओके नाउ अगेन जब आप मान लीजिए दोबारा से सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं तो आपने कुकी एक हेडर लाइन ऐड कर देंगे अपने रिक्वेस्ट मैसेज में, और दिस लाइन विल बी एडेड कुकी 1678. So when this message will reach to the server, in this example Amazon server is there, so Amazon server with the help of this ID will recognize you. क्यों रिकॉग्नाइज कर लेगा? क्योंकि इस आईडी के करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ किया था उसने डेटाबेस में आपको स्टोर करके रखा हुआ है, और दिस वर्क्स एज ए की, प्राइमरी की आप बोल सकते हो. दिस इज योर प्राइमरी की डेटाबेस में आपकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए, और आपने लास्ट टाइम क्या किया था सब डेटाबेस में स्टोर्ड है, और वो इन्फॉर्मेशन इस प्राइमरी की मदद से फैच हो जाती है. सो सर्वर विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज यू कि आपने पास्ट टाइम क्या क्या किया था. सो इन एरी का नाउ अब इसके बाद हर कम्युनिकेशन में क्लाइंट सर्वर साइड से कम्युनिकेशन होगा, क्लाइंट एंड सर्वर विल कोट दिस आईडी with each other, and then client and server will be able to recognize with each other. Okay, so this is the concept of cookies. So ये कई सारी business organizations के लिए बहुत helpful है, and many servers prefer to use cookies. Okay, so इससे का फायदा क्या है cookies का? Flipkart will help you to identify proper product, so इनसे उनकी सेल भी बढ़ेगी, कस्टमर्स को राइट प्रोडक्ट दिखाने में वो हेल्पफुल रहेंगे. Okay, and they can also analyze your behavior, and they can analyze what you like, what you dislike, है ना. So आपके बारे में lot of things they can gather, and उसके बेस पर they can provide you certain recommendations कि आप ये खरीद लीजिए, ये नहीं खरीदिए, ये ट्राई करके देखिए, and all that. So उनसे उनकी सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा. So cookies are helpful for various websites. They are also helpful for you, but sometimes they are dangerous. You know that cookies create risk to your privacy, because when you are using cookies, the site is able to know your preferences. Sometimes आप जो वेब सर्फिंग कर रहे हैं उसके बेसिस पर they can also identify your gender, they can also predict their age, all that. ठीक है, and race or whatever, many times they can gather personal information about yourself. So in that sense cookies are also sometimes dangerous, because they can make you lose your private information. Okay, so cookies के बारे में हमेशा that is a controversial topic, and कई बार इनका misuse भी हुआ है, and companies को उसकी वजह से fine भी हुआ है, and people have lost their private data. Okay, any question? I'm done. If you have any question you can ask. No? चलिए तो लेट्स टेक अटेंडेंस. सर हाँ बताइए. सर आज ग्रुप में बहुत लोग का मैसेज आ रहा है सर कि क्लास में सर टाइम इशू हो रहा है सर. मतलब क्या टाइम इशू? मतलब कि सर कल रात में बहुत लोग को मैसेज पहुंच नहीं पाया था सर कि आप 9:30 बजे क्लास लेने वाले हैं. ओह, इसके लिए बहुत लोग का सर लेट हो गया है, या फिर किसी को पता नहीं चला, किसी को डायरेक्ट लिंक आया तो पता चल गया. हमको भी नहीं आया था सर रात में मैसेज. कुछ लोग बता रहे हैं कि रात में मैसेज आया था. हाँ वो हो सकता है कि वो सिंक्रोनाइजेशन इशू होता है कभी कभी व्हाट्सएप के साथ. मैंने तो भेज दिया था, मुझे लगा कि सबको मिल गया होगा, या सुबह आप चेक कर. इसीलिए सर क्लास में सर पर अटेंडेंस भी उतना नहीं है सर. 25-26 बच्चा के आसपास ही आज क्लास ज्वाइन कर पाया सर. बहुत लोगों का ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि सर क्लास किसी भी टाइम पे ले रहे हैं. ओह, सॉरी फॉर दैट. एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट काम था, सो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा आधा घंटा प्रीपोन किया था, और मुझे लगा कि एवरीबॉडी विल गेट द मैसेज. सॉरी फॉर दैट. तो आगे से ध्यान रखेंगे. और आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड. मैंने तो टाइमली मैसेज शेयर कर दिया था, मे बी सिंक्रोनाइजेशन इशू की वजह से कुछ ऐसा हुआ सर. ये सर मेरे में भी सर मैसेज वेटिंग में दिखा रहा है सर कि आपने मैसेज कुछ किया है, लेकिन सर
अच्छा। लेकिन अभी लिंक आया तब मैंने ज्वाइन किया सर। ओ, रात वाला मैसेज मुझे भी नहीं आया और भी बहुत लोग को नहीं गया है सर। ठीक है, तो मैं आज किसी को एब्सेंट नहीं मार्क करूंगा। ठीक है, ओके ओके, सर। चलिए तो फिर अटेंडेंस लेने का कोई फायदा नहीं है। ओके,